ओके, चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करते हैं फ्रॉम दिस रिएक्शंस. पेज नंबर 92 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. सो जिनके पास टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक के साथ रेफर कर सकते हैं. ये हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे. अब देखिए, इस चैप्टर में 3 टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जाते हैं. नंबर 1 टाइप का न्यूमेरिकल होता है, दैट इज नथिंग बट कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द गिवन एलिमेंट और गिवन कंपाउंड. ये होता है. और नंबर 2 होता है, दैट इज व्हाट वी कैन से हियर, बैलेंस द रेडॉक्स रिएक्शन बाय यूजिंग oxidation number method. Or second is nothing but you can say using ion exchange electron method. So let's move. Balancing of redox reaction. Balancing using oxidation number method. So we have to go for the balancing of reaction by using oxidation number method. So let's move. Page number 92 from your textbook. That is nothing but second example. शायद मैंने आपको दिया था एग्जांपल सॉल्व करने के लिए, लेकिन चलते हैं उसी के साथ चलते हैं. Better I will prefer the C, third numerical from your textbook, that is H2SO4. So C numerical from your textbook, page number 92. Balance the redox reactions by using oxidation number method. उसके अंदर C H2SO4 aqueous. H2SO4 aqueous plus carbon solid gives you CO2 gaseous plus SO2 gaseous plus H2O liquid. And this reaction occurs in acidic medium. Okay, so this is the reaction, or we have to balance this reaction. Okay, this is the unsolved numerical from your textbook, page number 92 given. See, sulfuric acid H2SO4 aqueous plus carbon solid reacts to produce carbon dioxide, sulfur dioxide, and water molecule H2O is released. Here is H2O. Okay, so we have to solve this numerical, and this numerical has to be solved on the basis of, देखिए, these are the unbalanced chemical equations. और ये बैलेंस करने के लिए दो तरीके हैं हमारे पास. नंबर 1 by using oxidation number method, और दूसरा by using ion electron exchange method. तो हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड यूज कर रहे हैं. यार मैंने लिखा हुआ ऑक्सीडेशन नंबर, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है, काफी ऊपर है वो. सो by using oxidation number method, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड यूज करके हमें इसे सॉल्व करना है, और उस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे. ठीक है, हम उसके अंदर स्टेप्स फॉलो करते हैं. होप सो कि आप में से काफी सारे बच्चों को वो स्टेप्स याद आते होंगे कि कौन से स्टेप्स उसके अंदर इन्वॉल्व है. सो एनीवन प्लीज लेट मी नो द स्टेप्स. सो व्हाट इज द स्टेप नंबर 1? व्हाट इज द स्टेप नंबर 1? एनीवन? भूल गए सर? स्टेप नंबर 1 में क्या करना है हम लोगों को? We have to write the unbalanced equation. Very good. We have to write unbalanced equation given as it is. So क्वेश्चन का इक्वेशन as it is लिखना पड़ेगा. So we have here H2SO4 aqueous plus carbon solid gives you CO2 gaseous plus SO2 gaseous plus H2O liquid. This is the equation as it is हमें लिखना पड़ेगा. Okay, no problem. So as it is equation लिखा. Then step number 2. Step number 2 क्या है? What is the step number 2? Yes, anyone? Step number 2 में क्या करना है हम लोगों को? We have to write the oxidation number of each and every element. Am I right? Yes, Arthur, right. We have to write oxidation number of each and every element given here in this one. इसके अंदर this oxygen has -2, hydrogen has +1. So sulfur का कितना आएगा? कोई बताएगा? It should be, sulfur should be +6. सल्फर शुड बी +6. कैलकुलेट कीजिएगा आप लोग, उतना आएगा. नहीं आता वो कैलकुलेट करो एक बार वापस. दिस इज H2SO4.
H2SO4. That's why it should be +6. Here, carbon oxidation number. Yes, yes. What is the oxidation number of carbon? Anyone, please? Iska. Yes, yes, yes. Kashish, thank you very much. Kashish has given the answer 0. एक रूल शायद मैंने लिख के नहीं दिया था आपको, आपने शायद पढ़ा होगा बुक में से. One of the important rule: oxidation number of any pure element in its pure state must be equal to 0. This is one of the important rule while assigning the oxidation number. While assigning the oxidation number, this care has to be taken. Oxidation number of any pure element, underline करने की बात है, any pure element in its standard state, उसके standard state में is always 0. दो चीजें हैं, pure element और it should be in its standard state, it should be 0. Carbon given state में और standard state में, standard condition में carbon हमेशा solid phase में होता है. Solid phase is a standard phase of carbon and carbon pure element होने के कारण उसका oxidation number रहेगा 0. So it will be 0. कोई भी element, not of the carbon, कोई भी element, pure element, compound अलग बात होती है, element अलग बात होती है. H2SO4 is a compound. Combination of 2 or more element is compound. CO2 is compound. SO2 is compound. Carbon is element. Fe is element. Copper is element. There are many reactions which we are going to counter, which will be having a pure element. So that has to be taken care. So add one more rule into the rules to assign the oxidation number. The oxidation number of pure element in its standard state must be taken as 0. So carbon का 0 आता है. Everyone. Next, here again, oxygen is -2. Oxygen is -2. अभी यहाँ पे कार्बन प्योर नहीं है, कंबाइंड स्टेट में है. सो कंपाउंड में है, तो कंपाउंड में उसका कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो ऑक्सीजन का -2 होता है. तो दिस विल बी +4. This will be +4. Okay. Now, here again, this oxygen is -2. Sulfur has to be +4. Here, oxygen is -2. Hydrogen is +1. So this is the oxidation state or oxidation number what we can see. So हमने सबका oxidation number calculate किया. ये हमारा दूसरा step है. Then step number 3. Step number 3. Anyone? What is the step number 3? Anyone, please, बोलिए. What is the step number 3 during this process? See now, this I would like to listen from your side because अभी हमारा chapter already हो चुका है. हम लोग कुछ कर रहे हैं तो और जब steps follow करेंगे तभी तो हमारे answers आने वाले. So, anyone, please let me know what is the third step. Yes, we have to find out. सबसे पहले we have to find out the atoms, ions or species undergoing a change in oxidation number. पहला फाइंड आउट करना है ऑक्सीडेशन नंबर चेंज किसका हो रहा है. फिर दूसरी बात है कि कितने से ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है और कितने से ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, और फिर पर एटम कितना डिक्रीज है और कितना इंक्रीज है. 3 चीजें देखिए. सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे द एटम और स्पेसिस अंडरगोइंग द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर. नंबर 2 पे फाइंड आउट करेंगे बाय हाउ मच नंबर इट इज डिक्रीज्ड और इट इज इंक्रीज्ड, और तीसरी बात है पर एटम डिक्रीज और पर एटम इंक्रीज कितना है. वी हैव टू फाइंड आउट दैट पार्ट. सो चलते हैं. आप देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे +1 है, बाकी जहां पे हाइड्रोजन दिखता है +1 है तो नो चेंज. सल्फर +6, यहाँ पे सल्फर +4, दूसरा कहीं नहीं है. सल्फर का चेंज हुआ. सल्फर इज द एलिमेंट हुज ऑक्सीडेशन नंबर इज बीन चेंज्ड. ये चेंज हो चुका है सल्फर का. नेक्स्ट ऑक्सीजन -2, बाकी सब जगह ऑक्सीजन -2. कार्बन 0, यहाँ पे कार्बन +4. सो कार्बन का बदलाव हुआ लाइक दिस. सो कार्बन का चेंज हो चुका है. सो बाकी सब एलिमेंट का सिमिलर है, नो चेंज. तो इसका मतलब 2 एलिमेंट मिले. जनरली 2 एलिमेंट मिलता है, सल्फर और कार्बन, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो चुका है. अभी दूसरी बात है किसका ऑक्सीडेशन नंबर कितने से इंक्रीज हुआ और कितने से डिक्रीज हुआ. +6 का +4 बना, दिस इज डिक्रीज. तो दिस इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. सिर्फ डिक्रीज बोलेंगे तो भी चलता है आप लोग, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. और हियर कार्बन का 0 to +4, इट इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. सो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है और सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है. सो देखिए जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ इट हैज गॉन फॉर ऑक्सीडेशन,
और जिसका डिक्रीज हुआ दैट इज रिडक्शन बाय डेफिनेशन है, हमने डेफिनेशन ही देखा है, द एलिमेंट whose oxidation number increases has undergone oxidation और the element whose oxidation number decreases has gone a reduction. So ये दो चीजें उसके अंदर हो जाती है। अभी कितने से हुआ, तो यहाँ पे देखते हैं increases by 4 और यहाँ पे decreases by 2, decreases by 2, 6 का 4 मतलब 2 से डिक्रीज हुआ और ये 4 से इंक्रीज हुआ। अभी उसको और साइंटिफिक भाषा में बात करते हैं तो दिस कार्बन इज लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। Carbon has lost 4 electrons and this sulfur has took only 2 electrons. This is not fair. If it is losing 4 electrons, it must gain a 2 electrons. 4 electrons. तो बैलेंस होना जरूरी है। सल्फर का यहाँ पर भी एक एटम है, यहाँ पर भी एक एटम है, कार्बन का यहाँ पर एक एटम है, यहाँ पर भी एक एटम है, मतलब टोटल इंक्रीज पर एटम इज 4। हम लोग लिख सकते हैं स्टेप नंबर 4, total increase per atom, total increase in oxidation number per atom is 4, or we can say total decrease per atom is equal to 2. So this is not fair. That means if it is losing 4 electron, it must gain a 2 electron. So this must be multiplied by 2. इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 2 to the 4 बनेगा, बाकी तो सिमिलर आएगा। So next step is okay. So this equation has to be multiplied by 2, so it will be twice H2SO4, twice H2SO4 aqueous plus this is C solid plus gives you CO2 gaseous plus SO2 gaseous plus H2O liquid, ये होता है। ओके, अब देखिएगा नेक्स्ट रूल है हमारा, हमने 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया बिकॉज ये दोनों मैच नहीं हो रहा है, टोटल डिक्रीज टोटल इंक्रीज मस्ट बी इक्वल टू सिमिलर, सो इट इज लूजिंग 4, इट इज गेटिंग 2, दैट्स व्हाई इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2, सो इट बिकम्स 4। तो अभी ये कहा है यहाँ पे, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई किया हमने तो बैलेंस बन जाए। नाउ नेक्स्ट रूल इज बैलेंस ऑल अदर एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वो सारे बैलेंस करने हैं हम लोग। तो अब देखिएगा मैं इसी के अंदर कर देता हूं, यहाँ पे सल्फर 2 बन गए, सल्फर यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, सो आई विल राइट ट्वाइस हियर, तो सल्फर बैलेंस हुआ। बाकी कार्बन देखते हैं, कार्बन यहाँ पे 1 है, कार्बन यहाँ पे 1 है, कार्बन गॉट बैलेंस्ड, तो सल्फर कार्बन बैलेंस हो गए, बचा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उसके लिए नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, स्टेप 6, बैलेंस ऑल अदर एटम एक्सेप्ट, मतलब बैलेंस ऑल अदर एटम, ऑल अदर एटम ऑलरेडी बैलेंस किया, बैलेंस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वी कैन ऐड ऑन आइदर साइड, हमारे पास OH माइनस आयंस होते हैं और हमारे पास H प्लस होते हैं। अभी उसमें से क्या यूज करना है, देखिए हम लोग ऐड कर सकते हैं H2O, हम ऐड कर सकते हैं H प्लस और हम ऐड कर सकते हैं OH माइनस, लेकिन हमारा अगर एसिडिक मीडियम होगा तो हम ये यूज करते हैं, और हमारा अगर बेसिक मीडियम होगा तो हम ये यूज करते हैं, ये और ये। So water and H plus in acidic medium, water and OH minus आयंस in basic medium। इस रिएक्शन के बारे में पहले बताया कि दिस रिएक्शन occurs in acidic medium, वो लिखा है क्लियर कट बुक में लिखा हुआ है। ओके, सो ये साथ, सो अभी क्या करते हैं हम लोग कि दोनों तरफ हम लोग वाटर मॉलिक्यूल्स या H प्लस ऐड कर सकते हैं बीइंग इट्स एसिडिक मीडियम। तो हम पहले देखते हैं, यहाँ पे देखिए 2 to the 4 हाइड्रोजन्स है और यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन्स है। सो अगर हम लोग यहाँ पे 2 लगा देते हैं तो 2 to the 4 हाइड्रोजन्स बन जाएंगे अपने, तो वो बैलेंस हो जाएंगे। व्हाट अबाउट ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन से पहले हमें ऑक्सीजन बैलेंस करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 to the 8 ऑक्सीजन है, 4 to the 8 ऑक्सीजन, अभी लेफ्ट तरफ यहाँ पे 8 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 to the 4, 4 और 2 6, और यहाँ पे 1 ही है 7। तो अगर हम यहाँ पे टॉइस बना देते हैं तो अब देखिएगा टॉइस H2SO4, okay, aqueous plus C solid gives you CO2 gaseous plus twice SO2 gaseous plus, इस तरफ एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देता हूं बिकॉज इस तरफ ऑक्सीजन 4 to the 8 है, देखिएगा पहले ऑक्सीजन बैलेंस करना, 4 to the 8 ऑक्सीजन है, इस तरफ 2 और ये 4, 2 to the 4, 4 और 2 6 और एक 7 ही ऑक्सीजन होते हैं, मतलब इस तरह के ऑक्सीजन ऐड करना तो H2 ऐड कर देते हैं।
एक H2 और ये H2 कितना बनेगा, twice H2O बनेगा, twice H2O बनेगा. So अभी ऑक्सीजन बैलेंस हुआ, ये 2, ये 4, 6 और ये 2, 8 ऑक्सीजन बन जाते हैं. इधर भी हमारे 8 ऑक्सीजन बन गए, तो ऑक्सीजन बैलेंस. अभी बात करते हैं हाइड्रोजन की. हाइड्रोजन आते हैं 4 to the 2 to the 4, यहाँ पे आते हैं 2 to the 4. Hence the reaction is balanced. So we can say hence reaction is balanced. Reaction is balanced. देखिए, we have done nothing. We have just followed the steps. मैं बच्चों को यही बताता हूँ, काफी आउट ऑफ मार्क्स के अंदर मिल जाते हैं अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो. गलती होने की चांसेस बहुत कम है इसके अंदर इफ यू फॉलो द स्टेप्स. वन सेकंड देखिएगा. स्टेप नंबर 1, rewrite the equation, unbalanced chemical equation as it is. Step number 2, calculate the oxidation number of each and every element involved in a chemical reaction. Step number 3, find the species or atom undergoing a change in oxidation number. Also, we have find out by how much it is decreased or by how much it is increased. And also we have find out how much is the total increase per atom and how much is the total decrease per atom. So basically इस तरफ कार्बन का इस तरफ भी एक एटम था, इस तरफ भी एक एटम था, तो जो भी हो रहा है वो पर एटम ही था. So that is 4. सल्फर का इस तरफ एक ही एटम है, उस तरफ भी एक ही है, तो जो भी हो रहा है वो पर एटम है. So that's why 2 is the total decrease per atom. मिल गए हम लोगों को फिगर्स. तो दोनों फिगर बैलेंस होना जरूरी है. इसीलिए हम अगर सल्फर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों 4 4 बन जाएंगे, है ना. So in that sense we have multiplied this H2SO4 by 2. कार्बन को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, मतलब वो वैसा रहेगा. नेक्स्ट स्टेप में हमने बैलेंस कर दिए रेस्ट ऑफ द एटम्स अदर देन द कार्बन, अदर देन द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड देन फाइनली वी हैव बैलेंस्ड hydrogen and oxygen by using water molecules and H plus. Only water molecules and H plus. The reason behind that, this reaction occurs in acidic medium. So everyone please have a look over there and take a screenshot and then rewrite this equation. Hope everyone got it, or there isn't any problem to anyone regarding this numerical. Clear with this? So let's move to next. Is there any recommendation from your side? If anyone amongst you have the book, please let me know any questions from your book. Otherwise, I will take randomly whatever I feel right. Let's move to the now balancing of redox reaction by using a half reaction method or ion electron exchange method. ठीक है? Yes, Prashant, it's a quick revision, no doubt. I should go a bit fast, but need to understand numerical. So let's move. एक मैंने आपको homework already दिया था. Page number 92 पे B में A question. So this question is nothing but you can say H2C2O4. H2C2O4 that is in aqueous plus MnO4 minus aqueous gives you CO2 gaseous plus Mn2 plus aqueous. So this is and this reaction occurs in acidic medium. So this is the A for acidic medium. So I have written A for acidic medium. अभी देखिए मैं थोड़ा सा स्पीड में चलता हूँ. अगर आप में से कोई स्टेप्स बताना चाहे तो प्लीज बता दीजिए. You always welcome with your own initiatives. This is the portion. Now step 1. Step number 1, write the unbalanced chemical equation as it is. So this will be H2C2O4 aqueous plus MnO4 minus aqueous gives you CO2 gaseous plus Mn2 plus aqueous. Then step number second, write the oxidation number of each and every element. Okay. So this oxygen has to be -2, this hydrogen has to be +1. Now carbon का हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. So कोई बताएगा कितना है? This will be +3. This will be +3. Yes, thank you. This will be +3. Then here again -2. Manganese का कितना आएगा? +7. Okay. Yes, thank you. Then here is -2. Here is +4. Here is +2 itself. Already वहाँ पे दिया हुआ है.
Mn2 प्लस, चार्ज 2 प्लस है, ये चार्ज 2 प्लस है, मतलब उसका 2 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर की। Then step number third, we have to find out the species undergoing oxidation reduction. किसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। उससे हमें देखना पड़ेगा कौन से स्पेसिस का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है। सो आप देखिएगा हाइड्रोजन प्लस सब चेक कीजिएगा, जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन का सेम होता है, याद रखिएगा। हाइड्रोजन जहां कहीं दिखता है यहाँ पे +1, वहां पे है ही नहीं, छोड़ दो। कार्बन +3, यहाँ पे कार्बन +4, दिस इज बीन चेंज, मार्क डाउन करते हैं। ऑक्सीजन -2, here -2, no change. Manganese +7 और here is the +2, changed. So change हुआ। +3 का +4, it is increased. +7 का +2, it is decreased. Okay. So इसका increase हुआ, मतलब it is undergoing oxidation. Decrease हुआ, undergoing reduction. This is increased by 1 and this is decreased by 5. Decrease by 5, बहुत बड़ा decrease है, +7 का +2. Okay. Now next is 4. We have to write separate equations. Number 1 for oxidation and number 2 for reduction. Okay. तो oxidation किसका हो रहा है? जिसका oxidation number increase होगा, that is oxidation. So this is +3 का +4 oxidation. So here it will be H2C2O4 aqueous gives you H2C2 कन्वर्जन इसमें होता है, कार्बन यहाँ पर है, कार्बन यहाँ पर है, उतने लेने पड़ेंगे CO2 गैसियस। ओके। और मैग्नीज का रिडक्शन हो रहा है, सो यहाँ पे आएगा MnO4- aqueous gives you here Mn2+ aqueous. It's done. Now we have to balance all other atoms than the hydrogen and oxygen. अब देखिए यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे कार्बन एक ही है, it has to be balanced by 2. Okay. यहाँ पे Mn एक है, balanced. So other than the hydrogen oxygen सारे एटम बैलेंस हो गए। अभी हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए देखते हैं इसके अंदर, देखिए सॉरी नेक्स्ट स्टेप लेता हूं मैं इसके लिए, स्टेप नंबर 5. सो दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसके अंदर H2C2O4 aqueous gives you twice CO2 gaseous. Okay. And reduction reaction is here, that is MnO4- aqueous gives you Mn2+ aqueous. अब देखिएगा इस रिएक्शन के अंदर यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, सॉरी 4 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे 2 to 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नॉट बैलेंस्ड। हाइड्रोजन की बात करते हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे, इस तरफ कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो मैं इस तरफ twice H+ लिख सकता हूँ। Reaction occurs in acidic medium, so we can use H2O, we can use H+. ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 4 ऑक्सीजन इस तरफ है, 2 to 4 ऑक्सीजन इस तरफ है, ऑक्सीजन उस तरीके से बैलेंस्ड है। बचा सिर्फ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए मैंने वहां पे twice H+ लिख दिया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, पहला ऑक्सीडेशन बैलेंस हुआ। फिर रिडक्शन की बात आती है, थोड़ा सा मैं इस तरफ लिख लेता हूँ ताकि स्पेस मिले। gives you twice CO2 gaseous plus twice H+. ओके। अब देखिएगा इस रिएक्शन के अंदर Mn तो ऑलरेडी पहले बैलेंस था, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 दिखते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन है नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग को twice H2O ऐड करना पड़ेगा। twice H2O ऐड कर दिया तो ऑक्सीजन 4 हो गए, नहीं सॉरी 4H2 बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, जितने ऑक्सीजन है उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने पड़ेंगे, 4 बैलेंस। अभी हाइड्रोजन की बात आती है, यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ पे 4 to 8 हाइड्रोजन है, तो +8H+ ऐड कर सकते हैं हम लोग, दैट इज एक्वियस। यहाँ पर भी एक्वियस, सो इट्स गॉट बैलेंस नाउ, सो रेस्ट ऑल आइटम्स आर बैलेंस्ड। नेक्स्ट आता है स्टेप नंबर 6, चार्जेस बैलेंस करने पड़ते हैं। चार्जेस के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन। ओके, वो आता है और वो इससे पता चलता है। सो दिस इज द कार्बन which is losing 1 electron. So carbon loses the 1 electron over here. So we can say here plus 1 electron is lost. और यहाँ पे अगर इसकी बात करते हैं तो it has gained 5 electrons. So it has gained 5 electrons, तो इस तरफ आएगा, so plus 5 electrons इस तरीके से आएगा। Now the number of electron lost must be equal to number of electrons gained.
This is getting 5 electron, it is losing only 1 electron. This is not fair, so that's why this equation has to be multiplied by 5. So here it will be 5u, here it will be 5 to the 10, it will be 5 to the 10, and here will be 5. Now total number of electrons lost equal to number of electrons gain. Adding both the equations. दोनों equations add करते हैं. So it will be 5u H2C2O4. This is aqueous plus this is MnO4 minus aqueous. Okay, ये हो गया. अब देखिए ये 8H plus है और यहाँ पे 10H plus है. कैंसिल होता है 8 कैंसिल हुआ है, यहाँ पे 2 बचेंगे. So you can say 2 बचेंगे यहाँ पे. Gives you इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल हो गए. Electrons are cancelled. So अभी इस तरफ आते हैं ये 10 CO2 CO2 का है नहीं तो 10 CO2 बचेगा. Gaseous plus Mn2 plus अभी देखिए ये है 4H2O. So 4H2O liquid plus यहाँ पे twice H plus. अब देखिए अगर everything is balanced or not, ये जरूरी है देखना. यहाँ पे देखिए 5 to the 10 हाइड्रोजन है तो 4 to the 8 और ये 2 10 हो गए बैलेंस्ड. कार्बन की बात करते हैं 5 to the 10 कार्बन है 10 कार्बन बैलेंस्ड. ऑक्सीजन 5 4 the 20 ऑक्सीजन यहाँ और ये 4 टोटल 24 ऑक्सीजन होते हैं. तो ये 10 to the 20 और ये 4 24 20 और 4 ऑक्सीजन बैलेंस्ड. Mn balanced. So hence the balance reaction. This is the way how we balance the chemical equation. Clear with this? So we have seen both of the example. Balancing of the redox reaction number 1 by using oxidation number method और दूसरा balancing of redox reaction by using the half reaction method और ion electron exchange method. इसके अंदर क्या क्या कर रहा है once एक बार देखिए वापस एक बार. Right, the skeletal equation as it is. Point number 2, calculate the oxidation number of each and every element involved in the chemical reaction. Step number 3, find out the species undergoing a change in oxidation number. Also find out the atom or ion or species whose oxidation number increases, that is undergoes oxidation, whose oxidation number decreases, that is undergoes reduction. We have to find out. Step 4 में, step 3 के आधार पर step 4 आता है. किसका oxidation हो रहा है, किसका reduction हो रहा है, दो half equation separate करना है. इसलिए इसे half reaction method बोला जाता है. Oxidation half reaction, reduction half reaction. लेफ्ट साइड में जो स्पेसिस का ऑक्सीडेशन हो रहा है वही राइट साइड में कवर करना है और इसी तरीके से यहाँ पे जिसका रिडक्शन हो रहा है लेफ्ट साइड में उसी का राइट साइड में यहाँ पे स्पेसिस कंसीडर करना है, बाकी नहीं करना है. देन उसके बाद बैलेंस ऑल अदर एटम अदर देन द हाइड्रोजन ऑक्सीजन वो हमने बैलेंस कर दिए. उसके बाद बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन बाय यूजिंग H2O or H plus in acidic medium, H2O and OH minus in basic medium. Then balancing the charges balancing के लिए यहाँ पे number of electron loss must be equal to number of electrons gain. इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन के राइट साइड में लिखे जाते हैं और रिडक्शन के एरो के लेफ्ट साइड में लिखे जाते हैं, वो हमने बैलेंस कर दिए. When all are balanced, add both the equations and check or inspect the equation either it is balanced or not. This is the way how we calculate or write the equations or balance the chemical reactions. Clear with this? So I have solved two balancing of the chemical reactions by using oxidation number as well as we can say this half reaction method. Also everyone got it? और आज के लिए बस इतना ही. फिर आज का टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाता है. मंडे को मिलेंगे हम लोग. वीकेंड एंजॉय कीजिएगा. Stay at home, stay safe. Thank you very much. Bye bye.